Hey guys, welcome back to my channel. I am Deep and you guys have tuned into Miss Jiva Deep. Hope you all are doing very well. This video is going to be a bit different from the previous one because I know that you guys are expecting something different from me. In order to respect that, I have decided to spread the knowledge of makeup products. After having lots of conversation, we came to a conclusion that by starting up #building up your vanity series, I'm gonna cover each bit of information regarding makeup products, whether it is about primer, concealer, foundation, everything I'm gonna cover in this series. The video is gonna be very informative. Now, before moving forward towards the video, first I just want to say that if you guys want to give any suggestion regarding my next YouTube video, you can DM me as well as follow me on my Instagram and Facebook, and if I found your suggestion relevant to my channel's theme, I will definitely do it for you guys. Now, without any further ado, let's just dive into the video. So guys, this is the episode number 1 of #building up your vanity series. In this episode, I'm gonna cover whole about primers. So before moving forward towards the different primers, first, most of the girls don't know that what is primer, why do we need it, or do we really need it or not. So first of all, I'm gonna clear that. पहला क्वेश्चन आता है, मैं इस वीडियो में थोड़ा जो है बोलूँगी हिंदी में बिकॉज मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो इंडियन है. सो फॉर दैट आई एम गोना स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश बोथ. So, सबसे पहला क्वेश्चन आता है that what is primer? Now for example, we must have often seen कि जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वो सीधा बिल्डिंग बनाना नहीं शुरू होते हैं. पहले उसके बेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग हो. ठीक है. इन द सेम वे, नाउ यू गाइज कैन कोरिलेट दिस बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल विद योर फेस मेकअप. गाइज, इफ यू गेटिंग माई पॉइंट, you will realize that what I trying to say. After prepping up your skin with any primer, whatever you want to apply, foundation, BB cream or any concealer, it will glide on your face just like butter glides on hot aloo ka parantha. Mummy. Now the second question arises that why do we need primer, or do we really need it or not? Yes, we need it because it makes our base smooth, जिसपे हमारा मेकअप जो है easily glide हो सके, blend easily हो सके. वरना हमें blend करने में बहुत प्रॉब्लम आती है मेकअप को अगर हम प्राइमर नहीं अप्लाई करेंगे. दूसरी बात ये कि आप किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को बिना अपनी स्किन को कोई प्रोटेक्शन दिए बगैर कैसे लगा सकते हैं. फाउंडेशन एक मेकअप प्रोडक्ट है बट स्टिल इट इज मेड अप ऑफ मेनी केमिकल्स. सो उसे हम डायरेक्टली अपने फेस पे क्यों लगाएंगे. एज प्राइमर इज नथिंग, इट्स अ बेस ऑफ सिलिकॉन. ऑल्दो इट कम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्किन कंसर्न्स लाइक ऑयल बेस्ड प्राइमर्स, water based primers, cream based primers and mineral based primers. Oil based primers are for dry or extremely dry skin. Water based primers are for, you can say, oily skin. Cream based primers are for combination skin and mineral based primers are suitable for all skin types. सिलिकॉन हमारी जो है स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ओनली वो अपनी एक डिफरेंट लेयर बना लेता है बिटवीन योर स्किन एंड योर मेकअप, जिससे आपका मेकअप जो है इजीली ग्लाइड ऑन हो सके. सिलिकॉन एब्जॉर्ब ना होकर वो आपकी स्किन के ऊपर जो है इवेपोरेट होता है. स्किन के ऊपर अलग लेयर बनाने के बाद वो जो है इवेपोरेट होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है. उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है इवेपोरेशन का, दैट मीन्स जितना वो टाइम लेगा इवेपोरेट होने के लिए, दैट मीन्स कि वो प्राइमर उतना ही लॉन्ग लास्टिंग है और वो आपका मेकअप भी उतना ही लॉन्ग लास्टिंग रखेगा. And the last thing and the most important thing is it reduces the chance of oxidization. Oxidization क्या है? कभी कभी आप नोटिस करते हैं कि आपके जो मेकअप है, आपका जो फाउंडेशन है, वो थोड़ा सा ब्लैक एंड पैची सा हो रहा है. सो उसके चांसेस को कम करता है. मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं उसके चांसेस. हाँ, चांसेस रहते हैं बट बहुत कम. सो अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यू रियली नीड प्राइमर. द फर्स्ट प्राइमर इज नायका प्रेप मी अप प्राइमर. It comes in a very cute packaging of pink and white box. Under this there is a tube which contains the product
and it is a very lightweight primer, guys. It is enriched with vitamin E and also give a matte finish on your face, and its non-greasy formula instantly blurs out the appearance of pores and fine lines to make your skin smooth. It is a colorless primer, and the most important thing is it lasts for 6 to 7 hours and it is suitable for all skin types. आप इसे नायका से ले सकते हैं for ₹499. The second one is Swiss Beauty Pearl Primer. It comes in a very classy glass kind of tube. The product inside the tube contains some golden pores जो कि सिर्फ आपको उस ट्यूब के अंदर ही दिखेंगे, and it looks very pretty. It's a silky smooth pearl primer for the flawless and radiant skin. It is also a lightweight primer that glides on your skin. It fills and minimizes the appearance of pores and fine lines on your skin. And also, guys, it is dermatologically tested. And the best part is that it lasts for 18 hours, guys. So you can buy it for ₹699 और Amazon से आप इसके ले सकते हो $399 का. But I prefer कि आप नायका से ही लो. Now the third one is Insight Primer. It is a gel form of primer. It fills wrinkles and pores on your skin. It makes your skin very smooth. It fills your scars, pores and moisturize your skin very well, guys. ये primer जो है it lasts for 24 hours, guys. नायका से आप इसे ले सकते हैं ₹240 का और Amazon से आप इसे ले सकते हैं $229 का. Now guys, the fourth one is Lakme Blur Perfect. ये वो प्राइमर है जो मैं सबसे पहले मैंने यूज़ करना शुरू किया था. मेरा फर्स्ट प्राइमर था ये. Guys, it is a perfect start of flawless and professional makeup look. आपकी स्किन को बहुत instantly smooth बनाता है, radiant बनाता है. The best thing is that it lasts for 24 hours. नायका से अगर आप इसे लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं $750 में, और अगर हम Amazon की बात करें तो it costs for ₹496. Now the fifth one is Faces Canada Ultimate Pro Perfecting Primer. This primer has velvety formula for easy and fast application. It has lightweight texture that makes you feel light. It helps you to minimize the sweating through pores, which makes your makeup long lasting. Makes your skin soft and also smoothen out your makeup look. Reduces the look of fine lines and wrinkles, and also it's suitable for all skin types again. Stays for 24 hours. From Nykaa आप इसे ले सकते हैं $674 का, और Amazon से you can buy it for $584. Now the last but not the least, Blue Heaven Primer. It is a gel transparent primer. It has a lightweight formula with silicons and vitamins to soften, smooth and mattify your skin. Again, it lasts for 24 hours. And the best part of this primer is that it has a goodness of aloe vera, and also it is paraben free primer. You can go with any of these primers. Now guys, that's all for today's video. Hope you liked it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also ring the bell icon so you get notified whenever I posted a new video. Till then, bye bye.